So, hello and welcome everyone to Industrial Training Masterclass. In this section, we are going to be discussing about a domain-wise guidance, and we are going to be covering very interesting domain where most of you are targeting or most of you will target after listening to this section out. So, in the previous section, we have already discussed about finance domain in a very detailed manner. Plus, we have also discussed about an FP&A and a business finance. In this section, we are going to be discussing about management consulting, right, and taxation domain and banking and other domains which are there. So let us start with very interesting domain, management consulting, right? So before I move forward to the management consulting, just wanted to show you one very interesting thing, and that is this. So many of the times, if you could see in multiple attempts or many of the attempts I have seen, BCG always will be hiring through off campus. Okay, consulting का जो hiring होगा mostly it is gonna be done through off campus. What happens in the off campus hiring? Many a times what this company, so after this is about after you clear your CA journey. So many a times after you clear your CA journey, according to the data and statistics what I have, every attempt approximately 10,000 CAs will be qualifying. So they roll out a form, इनका एक form होता है, they'll just roll it out. Out of this 10,000, 3,000 plus students or approximately 3,000 students will apply. In every attempt, approximately 10 to 12 people are going to be shortlisted for the interview. इसमें से 2 या 3 they will shortlist. If I talk about the statistics of November, 2024, around 4 or 5 odd people have joined. So what is something they are going to be doing? सबसे पहले they will hire some in-house resource, plus they will hire some of the people, those who are from this. ठीक है. अब इसमें if you could see, most of the industrial training from BCG will be continuing there itself because of a brand name, or they might move to some other consulting firms because again purely depending on their area of interest. But let us understand what are exit options this consulting will offer you and why you should go into the consulting domain. Now it is a very fancy word. जानने में सुनने में बड़ा मजा आएगा यार, कंसल्टिंग में जाना, you want to get into consulting, but trust me, getting there is one of the biggest challenges. And before I start the session only, I would love to tell you out the consulting toughness for interview is 10 on 10. कंसल्टिंग का जो इंटरव्यू टफनेस रहेगा वो बहुत अलग रहेगा, वो 10 on 10 है. एंड व्हाट इज कंसल्टिंग ऑल अबाउट, लेट अस अंडरस्टैंड. एंड बिफोर आई कम टू दैट, लेट अस कम टू पेज नंबर 56. पेज नंबर 56 पे आ जाइए, हम नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ में. राइट, क्रॉस मार्क कर लीजिए पेज नंबर 56. लेट अस कम टू पेज नंबर 56 and understand what management consulting is. So if someone asks me what management consulting is, I define the management consulting into 3 simple words or 3 simple steps, which says consulting is all about problem solving for top management at faster speed, at faster pace or faster speed. Problem solving for top management at faster speed is a pure case of a management consulting. Let me give you a very small example. It is a story very long back. I don't know you were a part of the story or not. 8 to 9 years ago or 6 to 7 years ago, all of a sudden, Jio came into picture. एकदम से जियो पिक्चर में आ गया था. आई डोंट नो यू वर एबल टू रिलेट इट आउट और नॉट, बट एट दैट टाइम आई वाज स्टेइंग इन माय हॉस्टल डेज. So when I was staying in my hostel, then my friend now started knocking a door and says, Shivam, internet is free. Internet is free. I was like, bro, क्या बोल रहा है? That time you have a BSNL broadband at our home, right? जहाँ पे आप 2 GB का रिचार्ज करते होंगे, and that GB recharge you used to keep it for entire month. I hope you remember that good old days. Yes, sir. Now what happened all of a sudden, Jio started giving internet free calling, unlimited callings. And there were a lot of companies like Uninor, Tata Docomo, Airtel, Vodafone and whatnot. A lot of companies are there that time, right? And all of a sudden, those companies were not able to sustain.
But what happened, lot of customer base from Vodafone Idea, Airtel were started shifting to Jio. Jio में शिफ्ट होना चालू हुआ है. Now these companies, do you think they are facing a problem? Airtel के customer base is shifting to Jio. Do you think this company is facing a problem? The answer is yes. This is a problem. Do you think this problem will be solved by a guy who's selling a SIM? नहीं, उसको तो फायदा है, उसको जियो में if he's earning more money, he take a Jio, खत्म. But this problem need to be solved by top management, where they need to control and ensure that the customer of Airtel is retained, the customer of Vodafone Idea is retained. And do you think this need to be done slowly, or at faster speed? Yes, as faster speed. So if these things need to be done at a faster speed, this is a pure case of a consulting. So in consulting, everything need to be done on a faster way. In consulting, you will deal with the top management, CEOs, CXOs, and you need to solve the problems. Consulting is a very fancy and a glamorous jobs, of course, but yes, it comes with a lot of work pressure, and again, you need to adhere to the timelines which are there. Plus, the interview is also really tough. In consulting interview, whenever you are going to be applying, there is a concept called as a spikes. I hope you remember the concept of a spikes, which you have covered in the first lecture. I just covered it in the first lecture, right? I was telling you the advantages and disadvantages. Right, at the first lecture, that time I told you out the concept of a spike. Let me just show it to you where I was discussing the same. I was discussing the same when I showed you this. You will get an edge of getting a spike in a resume. Now in consulting, it is generally recommended that if you are getting and trying to get into consulting, we will prefer a candidate with a spike. Academics, work-ex, extracurricular activities. Either one of this 3 is recommended when you're going for an interview. Now please understand, when I am going for an industrial training into management consulting, let me call a consulting firm as BCG, Boston Consulting Group. Okay, मेरे पास spike कहाँ से होगा? Either I have got a rank in CA Inter, or I might have great work experience where I have worked with some big 4, right? That is there. Or my past extracurricular activities were really great, that I was a state level champion, basketball champion, and blah 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 blah. तो एक बढ़िया सा edge होगा. The biggest problem of getting here is resume shortlisting. Resume shortlisting will be only done if you have a spike recommended. वो generally देखेंगे ही. Yes, they will prefer it out. One of my very good friend and mentor who is working with us, Harshbir Oberoi, right? He did not have anything when he cleared his journey, but what he had was he learned the automation tool, right? Which is Power BI and other stuff, and analytical tools also, which helped him to leverage his CV, and after that he got into consulting. Okay, sir. So what does consultant do? देखो, consultant will solve the problems which are there. Consultant का काम क्या है? They need to solve the business problems, or they need to solve the problems which are there. Right? Every business have a problem, but many of the businesses will not be able to understand that they have a problem. Okay. Now, why it is a glamorous job? सबसे important बात, the stipend here is above 1 lakh rupees. Yes, BCG की बात करते हैं, it is more than 1 lakh rupees. Second, your travel, food, stay, don't need to worry. In audit, if you are staying in the 2-star, 3-star hotel, in consulting you'll stay 5-star hotel. Will not travel less than flight. मतलब normal, एकदम normal है उनके लिए. In BCG there is a saying, we have a 99 problem to solve, but we don't have one problem to solve, and that is a money problem. हमारे पास पैसे की कमी नहीं है. अगर आपने अपने क्लाइंट की ऑडिट फीस देखी होगी, हैव यू सीन द ऑडिट फीस ऑफ योर क्लाइंट? देखी है या नहीं देखी है? सच सच बताइए, सच सच बताइए. सर हमने देखी थी. मेरे क्लाइंट के बॉस की ऑडिट फीस थी 20 लाख रुपए, विच इज एन एनुअल फीस. इन कंसल्टिंग दिस माइट बी अ मंथली फीस. देखो यार, एयरटेल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, गिव मी अ स्ट्रेटेजी हाउ आई कैन रिटेन द कस्टमर. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Now, one very interesting thing which I wanted to show you, there is a consulting not only in one department. Please understand, there can be consulting across multiple departments, right? Like, just this very interesting part. It can be a strategy consulting. It can be an operation consulting. Operation consulting मतलब, say for example, बढ़िया से एक example देता हूँ आपको, let you will be able to understand it. Nowadays, lot of companies are moving to quick commerce. What is quick commerce, sir?
Quick commerce means the companies want the product to be delivered within 10 minutes. अब इससे biggest loss किसका हो रहा है? Who is facing the bigger problem? इसमें Amazon, Flipkart are facing the lot of issues. Because a lot of companies like Blinkit and Zepto are able to deliver in 10 minutes. And these people are facing a problem. Right? This might be irrelevant after a few years. But yes, as of now, this is what the case is. अभी तो यही हो रहा है. अभी these companies are facing a problem. Yes. Now, so as of now, these companies are facing a problem. Yes. Since these companies are able to deliver it in a very faster manner. So companies like Amazon and Flipkart and saying that ki how the hell we can solve this problem, and they need to solve it ASAP. Whom they will hire? They will come to you guys. They will say that you are management consultant. This is what the problem statement is. Tell me how I can fight against Blinkit, Zepto. कौन बोल रहा है? Amazon और Flipkart. कैसे फाइट करूं मैं, बताइए. और ये फटफट बताइए सर, मेरे को एकदम सॉल्व करना है. Whatever is needed, we are ready to give it to you. Right? And the best thing is that you will be able to interact with the top management leaders. So that is strategy consulting, operation consulting. Human resource consulting is also there. There can be a consulting into financial advisory, tech consulting. Tech consulting में a lot of companies, जैसे कि I was shown one of the candidate who moved to Accenture. What is this? He moved to the tech consulting, where he is advising the company how you can implement some of the automated softwares and where you can save some time. So that is also really important. That is also something which is growing these days. इसके साथ साथ बहुत सारी consulting हो सकती है. Political consulting can be also there. Right, where you are consulting the people to follow XYZ thing, which will help them to save their cost, money, and effort. Right, so that is what it is. Now, next very interesting thing. When you have decided to go into consulting, the first biggest step of an interview will be your resume shortlisting, where it is recommended to have a spike. We will discuss it in the resume building session. Right, okay, how do you prepare your resume which will get you an edge over others? That is first. Second, once you're here, your interview will be very much case based interview. So your preparation will be 10 times different here as compared to other domains. यहाँ पे preparation बहुत अलग करनी पड़ेगी बाकी domains के मुकाबले. Please understand this. In other domains, you need to focus more on index and other stuff and stuff. यहाँ पे they wanted to see how you are able to solve some of the case studies which are there. Now for that, let me come to the skill sets which is recommended when you are going to be going into this domain. First, very important, we will see that how good your business acumen is. क्या आप धंधे को सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो? If I ask you the same problem, how can Amazon and a Flipkart deliver within 10 minutes instead of delivering within 2 to 3 days? That is a problem statement. Are you able to think of it? क्या आपको धंधा ही समझ में नहीं आ रहा है तो भाई गया? Are you able to do a research? That is also really important. Right? Do you have the analytical skill sets? Right? Do you have a good communication skills? Why very important? Please understand this, because you are not going to be dealing with the accountant or the ground level people out. You're mostly going to be dealing with CXO, CEOs and the top industry leaders which are there. And I already told you, spikes is highly recommended when you're going here. Now, first, they will give you the case studies or interviews will be mostly based on multiple parameters. The first type of a case study will be profit related case study. That means they will give you a case study. I have given you a small case study here, request you to go through it. It says that a manufacturing company has seen a consistent decline in a profit and steady sales. How would you analyze the company? So they just wanted to check your analytical mindsets. अब इसके लिए एक बढ़िया सी चीज देता हूँ. What you can do, there is a lot of case study booklets, case study books, which you can just go through it and read it out. मुझे सबसे अच्छी I have read ISB का case study book. You can go through it. All the B schools have their case study book. A, B, C, Ahmedabad, Bangalore है ना, तो सबकी case study books हैं. You can just go through it. I'll just upload it again into an LMS. आप जाइए वहाँ पे आपको free में एक case study book मिल जाएगी और definitely you can just read it out and take an advantage. पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या. This is also relevant when you're going for an FP&A and business finance role. वहाँ पे भी आपको एक एज मिलेगी. मार्केट एंट्री, दे माइट आस्क यू कि हाउ डू वी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, बताइए. राइट, पी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की हाउ डू यू डू अ प्राइवेट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर रिलेटेड स्टफ. वैल्यू चेन फ्रेमवर्क, तो लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स विल बी देयर which is there. M&A framework, new product launch framework, pricing framework, Salesforce effective framework, right, capability expansion framework, growth framework, and this is one of the very interesting which is guesstimate. अंदाजा लगाइए कि
what is the revenue of your nearest Domino store? Count the number of potholes in the road of Mumbai. Count the number of guess the number of coins which are there in the mall. Then again, many a times the question will be incomplete. You need to ask them further questions. You need to be very smart enough when you are asking these questions. And trust me, this is going to be coming when you are practicing and understanding it in a better way. हमारा मैनेजमेंट कंसल्टिंग का मास्टर क्लास है जो कि आपको पूरा एंड टू एंड ये और सिखाएगा कि कैसे इसमें और एक्सपर्ट हो सकते हैं. हाउ डू यू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, हाउ डू यू डील विद द केस स्टडी. देयर इज अ मीसी प्रिंसिपल, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट. तो ये सब प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपको सीखना होता है कि कैसे आपको केस स्टडी फ्रेमवर्क करनी है. तो एवरीथिंग इज गोना बी टॉट टू यू दैट गाइज इन द मास्टर क्लास, right? We have multiple courses available. If you want to go for additional courses, you can just see through it. Okay, so this is what a consulting is. Consulting is a very interesting domain, but of course the entry is really really tough. Whenever you see the vacancy out, you need to be very smart enough to do 2 to 3 things. Number one, apply your resume with a good spike. That is first. Now whenever you are going to be applying your resume, it is really important to proofread. Second, is there एक कहीं ना कहीं कोशिश करें reference लगाए, right? Your reference will play a very important role. And as and when you're getting selected, mostly you will be given a buddy, right? What is a buddy? आपको एक कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीसीजी विल गिव यू कि दिस इज अ कैंडिडेट और दिस इज योर सीनियर विथ whom you can practice it out a case study, or he or she will guide you out in and out. So that is there. And fourth, आपको बहुत इज्जत से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. बट एवरीथिंग बोल्स डाउन टू योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, है ना. तो दैट इज व्हाट इट इज. ओके, you know, 2 to 3 rounds of interviews can be possible here depending on this, right, company to company. But yes, this is what a consulting is, your consulting. Okay, now let us move to the next very important domain. But before we move into next very important domain, let us fill out this detail. What are the exit options of starting a career into consulting? So when you start your career into consulting, many of the people will be moving to the investment banking, right? Because one of my very good student, uh, she worked in she's currently working with the Bain and Company. She's into she's working into private equity and venture capital side. Her name is Nivedita Natarajan. So of course, whenever she want to take an exit, she can easily move to investment banking side, mid office or front office, right? Which is generally most of the people might move into. Second, people might also move into an FP&A domain, right? But it is going to be more towards a business or strategy side, where they are going to be preparing a lot of strategies for an organizations and helping the organizations go. So that is the second domain which they will be going into. Or they might be going into some of the CFO or CEO advisory role, where a lot of CEO, CFO will be needing a lot of advisory. Let me take a small example. Say, for example, the sharks of a Shark Tank need some advisory function on growing some of the venture where they've invested. So this might be one of the very good role where they might play a good roles. Plus, generally, I've seen this people will move and exit towards startups, right? Because startups is a company which will pay you higher, mostly because these companies are built to grow fast and they are ready to do whatever it takes to do fast, right? And startups is all about solving a problem, right? So that is why they prefer hiring the management consultant folks as compared to other people out. So that is what it is. Let us talk about the masterclass. The masterclass is approximately 12 hours of a content, right, which is there. Of course, doing a masterclass does not mean that you will get selected in consulting, but yes, it will help you get an edge to prepare your resume well, and you'll know more of a technical content. So this is prepared by one of our mentor, Aditya Agrawal, right? He is a chartered accountant plus he's a ISB graduate, so he have worked there. Right, of course, over a period of time, we'll be updating our master classes with the content and stuff. So definitely the number of durations will might increase. So that might be the case. बहुत बढ़िया बढ़िया मास्टर क्लासेस आपके लिए बनाएंगे. If you're interested, definitely go for it. So this is what a consulting is. I hope the consulting is clear. The consulting world is very different, but yes, definitely it is going to be helping you in the further course of action if you're really interested to solve the business problems. Okay. Now let us come to the very interesting domain which you might have heard and you might have worked during your journey, which is a direct taxation domain. Okay, let us come to page number. Let me find out the page number. चलो भैया चले हम हमारे काम पे. डायरेक्ट टैक्सेशन. आई थिंक दिस इज आगे आगे क्या. हाँ, दिस इज इन डायरेक्ट टैक्सेशन.
Direct taxation. Chalo. Let me take a very small example. Okay. So say for example, let me take a very interesting example. Say for example, I'm selling a course worth rupees 2000 rupees. I'm selling a course worth rupees 2000 rupees. Now let me take it is one of the masterclass which is there, which is इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मास्टर क्लास है ना. एक बच्चे ने मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मास्टर क्लास लिया. ठीक है, लेट अस अज्यूम द रेट ऑफ द मास्टर क्लास इज 2000 रुपीज एंड आई सोल्ड इट टू 10 स्टूडेंट्स. तो बच्चा बोला कि सर हैज मेड अ रेवेन्यू ऑफ 20,000 रुपीज. रॉन्ग. सर हैज नॉट मेड द रेवेन्यू ऑफ 20,000 रुपीज बिकॉज दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द कंपोनेंट विच इज जीएसटी कंपोनेंट. ओके. Now, इसमें if I take a GST component which is 18% and if I remove that 18%, that boils down to minus 2,000 rupees, which is 305 rupees. 305 रुपए आपने, मैंने नहीं, मैं बाद में दूंगा ऑफ कोर्स, आपने गवर्नमेंट को दे दिए. और जैसे ही आपने मुझे दिया, आई एम एक्टिंग एज एजेंट, आई एम कलेक्टिंग 305 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट, राइट. तो आपने मुझे कितने रुपए दे दिए? 305 रुपए एक कोर्स को देखने के लिए, और बचे हुए अमाउंट का मेरा रेवेन्यू बुक होगा. दिस इज व्हाट माय रेवेन्यू विल बी. बट डू यू थिंक दैट दिस कोर्स इज गोना बी रनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं सर, इसमें हमें लगेगा मार्केटिंग कॉस्ट, राइट, पेमेंट गेटवे चार्जेस, देन बैंडविड्थ कॉस्ट, डेवलपर कॉस्ट, मेंटर पेमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस कोर्स. यस सर. मोड़ लेते हैं इस कोर्स का कॉस्ट जो मुझे जा रहा है, सपोर्ट टीम का कॉस्ट 1000 रुपीज, तो बचा मेरे पास 695 रुपीज. ओके, ध्यान से देखिए, आई एम लेफ्ट विद 695 रुपीज. अब इसके बाद आई नीड टू पे दी डायरेक्ट टैक्सेस विच इज इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट. हाँ जी सर. तो आपको पे करना पड़ेगा 695 पे. लेट मी अज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस 30%. लेट अस फॉरगेट द चार्ज एंड अदर स्टफ. ठीक है, तो आई नीड टू पे 208.5 रुपीज टू द गवर्नमेंट, राइट. आई नीड टू पे 205 रुपीज टू द गवर्नमेंट. यस सर. विच बॉइल्स डाउन टू द नंबर इज 490 रुपीज इज लेफ्ट विद. मैंने कितना कमाया सर? एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की मास्टर क्लास बेच के आई हैव अर्नड अप्रोक्सीमेटली 490 रुपीज. ठीक है. हाउ मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अर्नड? 305 plus 208, 513 rupees government of India have earned. And how much camonk have earned? Less than what is government has earned. Agree or disagree? Agree, sir. Now, most of the companies are facing this problem. काफी सारी कंपनीज को ये प्रॉब्लम होती है. यार व्हाट द हेल इज दिस यार, आई एम पेइंग मोर टू द गवर्नमेंट देन व्हाट आई एम अर्निंग. एंड इफ आई आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लीज कम एंड टेक अ लेक्चर फॉर वन डे और रिकॉर्ड वन डे से रिकॉर्डिंग, विल दे डू इट फॉर मी? नो. विल डू अ मार्केटिंग फॉर मी? नो. देन व्हाट द हेल दे आर डूइंग? व्हाट द हेल दे आर डूइंग? They are giving me a support function. They are helping the economy grow and I am helping the economy grow. Now please understand, indirect tax and a GST is a tax which is paid by everyone. Okay? Direct tax is a tax which is paid by rich people. Generally I say that. If you want to deal with everyone, if you want to deal with the masses, you will be dealing with GST. But if you want to deal with the rich people, you will be dealing with the direct taxes. Now, let us come apart, jokes apart. But what I'm trying to say, every companies want to plan this. Every company want to work in such a way that they can do a very good planning over this. And that is why we require a people like you. We require candidates like you who can do a tax planning, for the companies and corporates. Here I am not talking about the CA firms. Here I am talking about mostly when you will go in industrial training for taxation domain, you will be working into an industry where you will be solving a company's problem. Finance domain, finance domain session where you are solving a company's problem, where one of the business function is taxation domain, and where
You need to solve the company's problem. कि भैया, this is what the Reliance is facing, bro. I need to solve this problem. What you need to do? You need to solve the company's problem when you are here. Right? You need to solve the company's problem when you are here. हाँ चला गया. You need to solve the company's problem which are there. Okay, just a second. Page number. हाँ. You need to solve the company's problem. Now, what are the three major things you will be doing when you're going into the taxation domain, sir? Taxation domain, whenever you go, you will be majorly working into compliances, advisory, and litigation. ये तीन मेजर काम होते हैं जब भी आप किसी भी कंपनीज में जाते हैं. कंप्लायंसेस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन. सर व्हाट डज कंप्लायंस मींस? यार बेसिकली यू आर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑल द रिटर्न्स व्हिच आर देयर. दैट इज अ प्योर पार्ट ऑफ अ कंप्लायंस. एडवाइजरी फंक्शन. ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी ग्रेट इंटरेस्टिंग केस स्टडी. Okay, let's see, can you solve it out or not? There's a very interesting case going on. This is a pure case. Imagine that you are working with a company. Okay, let me consider a company called as Apple. राइट, एप्पल की कंपनी में आपने ज्वाइन हुआ. अभी अब एप्पल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो नहीं होता है, बट ठीक है. लेट अस अज्यूम दैट यू आर गेटिंग इनटू एन एप्पल का यू आर वर्किंग देयर. एप्पल कंपनी डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स न्यू आईफोन. लेट मी गिव अ नेम ऑफ आईफोन इज आईफोन 20 Pro. ठीक है, Apple decided to launch its new iPhone 20 Pro. Now they have decided to launch and do a mega grand event for a launch in Dubai, for which they have incurred the cost of 100 crore rupees. 100 करोड़ का खर्चा कर दिया. कहां पे लॉन्च किया? दुबई में. Their major sales were in India, USA, UAE and other countries. इंडिया में देयर सेल इज से फॉर एग्जांपल 30%, यूएस में देट इज 30%, यूएई में 20% एंड अदर कंट्री में 20%. ओके, नाउ what this Apple company did, they have incurred the cost of 100 crore rupees in Dubai, in UAE. हाँ जी सर. So what they said, we will apportion this cost in different countries based on the sales which is done. तो बोले कि भैया हमारा सेल इंडिया में 30% है, तो वी विल अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ 30 करोड़ टू इंडिया, 30 करोड़ टू यूएसए, 20 करोड़ टू यूएई एंड 20 करोड़ टू अदर कंट्रीज व्हिच आर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज interview question or the advisory question which might be asked you when you're working with this company कि can we do this? Can we do this? क्या मैं ये कर सकता हूं? अरे बताइए, आई एम आस्किंग यू गाइस, कैन वी डू दिस? अच्छा ध्यान से सुनिए. इफ योर आंसर इज गेटिंग yes or no directly, no, please understand, we need to think, read what is there in the act. We need to find out whether there is a provision related to this. This is a pure case of transfer pricing and stuff, right? Plus we need to understand whether there is any case law related to this. If you love to read the Bare Act, if you love to read the case laws, if you love to read the act, if you love to read the amendments, taxation is the domain which is made for you. And you can think of getting and doing into an industrial training into taxation. Please understand this. Please understand this. Sir, but I wanted to understand, when I join any of the industry, okay, when I am joining the industry for an industrial training into taxation domain, let me talk about IDT. Most of the companies will not have, very few of the companies will have FTP and customs. What is FTP and customs? Of course, you will study in a CA final. But yes, mostly the companies will have a GSTs, which is there. Okay. If I talk about the direct taxation may mostly when you go to a companies, that's one good thing. I've seen a lot of people will also take industrial training to big fours into taxation domain. You can also move into some of the very interesting domain like CIT. You must have heard this name. If you've not heard it, you need to know it out. Corporate and international tax. If you don't know the full form, please jot it down. Corporate and international tax is CIT. Second, you might hear FS tax. What is FS? Financial services tax. Financial services tax. This is very interesting domain where you are going to be working mostly towards those companies which are NBFCs, mutual funds, insurance houses, all those companies which are into the financial services sector. Then you will be working into GMS. What is GMS? GMS is a global mobility services, right? GMS tax, yeah, GMS areas. Generally, what does it happens? Say, for example, a company working in US, a company working in UK, company working in different countries.
You are sitting in India giving a taxation consultation and advisory work related to that. So that is one of the area, right? You will be working in some of the expat क्या होते हैं जो इंडिया में आते हैं फॉरेन से, एक्सपेट टैक्स और ये सब में काम कर रहे हो. Then you will be working into international taxation or transfer pricing, checking whether the transaction is at arm's length price or not. क्या बरोबर से ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, whether that is happening with a proper transaction arm's length or not. So that is there. इसके साथ साथ you can also work into M&A taxation, right? But again, very tough to go here. If you have a good reference, plus if you have a good candidate, so you might get into M&A tax as well. तो उसमें भी आपको जा सकते हो. So this all options might be there when you go to any of the industry or any of the big four into this. But one understanding you need to keep it in your mind, when you move to IDT, mostly your career will be linked and aligned towards indirect taxation only. Direct taxation में what edge you have other multiple subs taxation role. So if you join corporate and international tax, you can move to international tax or transfer pricing or M&A tax over a period of time. Now please understand one very interesting fact about a taxation domain. Taxation में the person, those who love a bare act, love to read the act, love to read the amendment, should only go here. Otherwise, don't think of going here. Right? That is first. Second, one very interesting thing which I wanted to tell you out. Sir, what is an exit option if I start my career from a taxation domain? Now, let me give you a small example. One of my very good friends, she worked with me in Udan. Her name is Deepika Patra. She was working with indirect taxation domain in GST. She was working there. She did her articleship from Big Four in indirect taxation. After that, she wanted to switch. Where? She wanted to switch to FP&A. So when you're working with the industry में internal transfer is good enough. You can move. Generally, that is called with the term of IGP. What is IGP? Internal job posting, which you can take it out within 18 months or 12 months, depending on a company policy. So you're working with IDT, I want to take a IGP, you move to FP&A. From FP&A, you work here again for 5 to 10 months, and then you can switch a company. Sir, IDT say if I switch a company, can I switch a company directly? No. Again, sir, in articleship किया मान लो mid size firm से. Okay, sir. Then I worked into taxation. Okay, sir. Say for example, I worked in IDT, but over a period of time when I was doing industrial training, I did not like it. Okay. Now, once this is done, you will have a 6 month study leave, and imagine that you clear it out. है ना, आप क्लियर हो गए है ना, और उसके बाद आप डेफिनेटली आए मेरे पास कि बोले क्या करना है, राइट. आफ्टर दैट इज डन, से फॉर एग्जांपल यू जॉइन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फर्म अगेन. Here again you are working with IDT and then you take a IGP into the different domain. ऐसा कर सकते हो आप. अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगेन यू नीड टू क्रिएट ए स्टोरी लाइन. प्लस प्लीज अंडरस्टैंड योर रेज्यूमे प्रेजेंटेशन विल हेल्प इन डिसाइड whether you can move to that domain or not. That is also very very important. वो मैं सिखाऊंगा, ये अभी आपको अब नहीं जरूरत है, ये अपन डेफिनेटली जीआर में सीख लेंगे, बट ये चीज आपको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और जरूरी है. ठीक है, so that is what it is. I hope this is clear to you. How do you take a transfer and transition when you are moving from one domain to another? So this is how the taxation domain works. Please understand this. Okay, yeah. Chalo, so let us write down the page number for direct taxation and indirect taxation. Let me just go through the skill sets which are needed for the direct taxation and indirect taxation. Okay, so sorry, I just missed out the pages. Okay. So this is again, देखो ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स इन इंटरव्यू दे माइट आस्क यू टू ड्राफ्ट समथिंग, तो ये भी चीज़ें हो सकती है. ड्राफ्टिंग स्किल्स देख सकते हैं. आपका नॉलेज, ड्यू डेट्स पूछ लेंगे, राइट. कैन बी रिवाइज GSTR1, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, राइट. कंप्लायंस कि क्या आपने GSTR1 फाइल किया, व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, XYZ. ठीक है. नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर, येस, विद सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग इन द ऑफिस, तो ये सब चीज़ें आपको पूछेगा, right. So that is what is expected. Now please understand, before you join in, please ask, if possible, if you have a good terms, and you need to ask it in a very sober way, what is the percentage of a compliance work I'm going to be getting, what is the percentage of advisory work which I'm getting, are there any litigations which I'll be working on. तो थोड़ा सा इसका आप ब्रेकअप समझ लेना whenever you're going to be joining in. ठीक है बेटा, वाला ब्रेकअप नहीं है ना, ये वाला काम का ब्रेकअप समझ लेना आप. ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू IDT. Similarly, I think goes for direct taxation also, right? Drafting skills very important. Your compliance skills and knowledge about the topic and subject. Please, if you are targeting this domain, इज्जत से आप डायरेक्ट पढ़ना सीख लो, and you should know the things in a very practical manner. ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स का QR कोड डाला हुआ है, लेक्चर लिए तो इसका भी QR कोड डाला हुआ है.
चलो आ जाते हैं वापस। ओ सो सॉरी, पेज नंबर लिख लेते हैं, है ना, पेज नंबर लिख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का पेज नंबर है, लिख लो यार, बाद में आप फिर उधर उधर करते हो। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का पेज नंबर है, डायरेक्ट टैक्स इज 48। चलो, डायरेक्ट टैक्स इज 48 and indirect tax must be no, थोड़ा गया, indirect tax is 52, page number 52. That's perfect. Interview toughness, I will mark it, देखो this is going to be pure technical, so I would mark it 7 ठीक है, 7/10, 7/10, this is what I'll mark. Now generally people from direct tax and indirect tax will move into the same funnel. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आई हैव टोल्ड यू आउट अक्रॉस मल्टीपल रोल्स, पीपल विल मूव इनटू द मल्टीपल रोल्स, प्लस दे माइट इजीली मूव इनटू द फाइनेंस डोमेन, तो फाइनेंस से दे कैन मूव टू टेकिंग एन आईजेपी एंड दे कैन मूव टू डोमेन्स। सर कैन आई मूव फ्रॉम इंडस्ट्री टू बिग फोर? मान लो मैंने मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप की, देन आई मूव टू सम ऑफ द इंडस्ट्री फॉर टैक्सेशन, देन कैन आई मूव to big four? Because yes, you can move it out provided you can showcase that you have a good knowledge regarding other stuff. सिर्फ कंप्लायंस का नॉलेज रहेगा तो एज नहीं मिलेगा, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन का थोड़ा सा एज मिल सकता है, राइट। आईडीटी में इंटरनल तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे बिकॉज क्योंकि जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी तीन ही है, बट यस यू कैन मूव टू फाइनेंस डोमेन एंड इसमें भी यू कैन जो टू आईजेपी, ठीक है, आईजेपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ठीक है, यस। लेट मी टॉक अबाउट मास्टर क्लास। डायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास दो तीन मास्टर क्लास है, एक एम टैक्स का है, वन इज एम टैक्स मास्टर क्लास, प्लस वन इज डायरेक्ट टैक्स मास्टर क्लास, राइट। डायरेक्ट टैक्स का मास्टर क्लास इज अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स, एम टैक्स इज अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, ठीक है। एम टैक्स इज प्रिपेयर्ड बाय शुभम अग्रवाल एंड डायरेक्ट टैक्स इज प्रिपेयर्ड बाय व्योमेश पाठक। Vyumesh Pathak sir was a director with KPMG, is now moved to Capgemini, industry move कर लिए, so that is there. Good content, right? You'll love it out, मजा आ जाएगा आपको, right? दोनों को चीज़ें कोशिश की है पूरा प्रैक्टिकली सिखाने की आपको। इनडायरेक्ट टैक्स की कोर्स, IDT course is for approximately 15 hours. It is recorded by Vaibhav, right? Vaibhav Gupta, and he's the guy who's worked with EY and I think for 8 odd years he has worked with EY. Good knowledge, you'll love it out, मजा आएगा आपको सीख के, ठीक है। चलो, now let us move to the next very interesting domain, banking. Banking में move कर लेते हैं। You will get a lot of opportunities into a lot of banks, huge banks are there. This is not an investment bank, please understand, this is a commercial bank and this is a pure investment bank which I'm talking about, right? कमर्शियल बैंक्स में आपके आ गए आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, राइट, एचडीएफसी बैंक्स, ऑल दिस बैंक्स विल गोना बी अ पार्ट ऑफ अ बैंकिंग फनल व्हिच इज देयर, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट रोल्स बैंकिंग माइट ऑफर यू, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड व्हेन यू आर गोइंग टू द बैंकिंग फनल। So now let us move to very interesting domain which is banking. Let us come to page number, directly guys to 60। चलो क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर देते हैं साथ साथ में, पेज नंबर 60। आई होप यू हैव रीच्ड देयर, ओके। Now banking mostly is divided into multiple subdomains which I can refer to, okay। First role which you might get in the banking domain is relationship manager, okay। Second is credit manager, third is treasury, fourth is internal audit, fifth is finance, sixth is compliance, ठीक है। These are the roles which are mostly offered in the banking funnel.
दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन विद द फाइनेंस सेक्शन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? जब हमने फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज समथिंग विच ऑलरेडी कवर्ड, फाइनेंस में आ गया था. Internal audit, since every bank have their own processes and systems where they need an internal auditor, and mostly they will prefer an internal auditor in house because cost saving रहेगा, time effort बचेगा in lot of things. Here you need to go to one branch to another branch, one branch to another branch, travel, do an internal audit which is there, which is purely related to the banking domain. Okay. Now let us understand what these two major roles are, and mostly, trust me guys, this is one of the domain. If I talk about, so 10 to 15% of chartered accountants go to a banking domain after becoming a CA. मतलब कि स्टेटिस्टिक्स बात करें, अगर 10,000 सीए बन रहे हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 सीएस विल मूव इनटू बैंकिंग डोमेन. नंबर वन रीजन, वेकेंसीज आर ह्यूज इनफ हियर. नंबर टू, राइट, there is one of the thing which banking might give you is the exposure of working across multiple business functions. Plus यहाँ पे IGP जो होता है बड़ा easily हो जाता है, right? You can move from one department to another very easily. And banking industry is really small enough where most of the people know each other. क्योंकि क्या होता है, say for example if you're working with ICICI, you are shifting to HDFC. Trust me, ICICI का कोई HDFC में move होगा तो they are easily able to check your background which is there. Now let us understand what is the relationship manager work is. Relationship नाम से ही समझ में आता है बेटा, रिश्ता. हा, रिश्ता बनाए और बिजनेस लाए. मतलब क्या, लिखो, मैनेज रिलेशनशिप एंड ब्रिंग बिजनेस. बेटा जो तुम रिलेशनशिप सोच रहे हो वो नहीं बेटा, है ना. रिश्ता बनाओ और धंधा लाओ. से फॉर एग्जांपल CMONK have its bank account with ICICI Bank. Now ICICI Bank have assigned me a relationship manager. This relationship manager role is to ensure that किसी for example मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े, I'll get a call from a relationship manager guy. This is sir, why don't you make an FD for the same? Sir, do you need a cash credit? Do you need a OD? Do you need a loan? Do you need that? Do you need this? इनका काम क्या है बेटा, धंधे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको और प्रोडक्ट अपसेल करो और एंश्योर करो कि यू ब्रिंग मोर एंड मोर बिजनेस. Now imagine that your company, your favorite company want to expand. मतलब क्या, CMO wanted to expand and for that expansion I need 100 crore of rupees. मुझे 100 करोड़ चाहिए थे. रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या है कि बिजनेस लाए. तो रिलेशनशिप मैनेजर को मैंने बोला देखो आई नीड 100 करोड़ ऑफ लोन, गिव इट टू मी. राइट, रिलेशनशिप मैनेजर बोला यस सर, आपका हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना पड़ेगा एंड फ्यू थिंग्स विल बी नीडेड एंड आफ्टर दैट विल बी हैप्पी टू गिव यू लोन. रिलेशनशिप मैनेजर ने धंधा ला लिया 100 करोड़ का. आफ्टर दैट इज डन, दैट बिजनेस इज पास्ड ऑन टू a credit manager. What is the role of a credit manager? To check the credit worthiness, of client, of the client and approve the loan or other stuff जो भी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉन टू द रिलेशनशिप मैनेजर, उसने बोला 100 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बट डू यू थिंक बैंक विल गिव मी द लोन लाइक दिस ओनली? इल्ले नहीं देगा. बैंक बोलेगा सर कोलेटरल दो, प्रॉपर्टी दो, बीजी दो, ये दो, वो दो. बीजी तो नहीं मांगेगा, बट दे विल आस्क फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, राइट. दे विल आस्क मी फॉर अ प्रोजेक्टेड रिपोर्ट. दे विल आस्क मी कि यार चलो बताओ सीएमओ कितना कमाएगा अगले साल. तो आई नीड टू सबमिट ऑल दो स्टफ टू हुम, टू क्रेडिट मैनेजर. तो क्रेडिट मैनेजर क्या करेगा, दे विल चेक the business which is brought by the relationship manager and they will approve it. They will check my credit worthiness and they'll approve it. What is the role of a credit manager? To check the credit worthiness. अब एक चीज ध्यान में सुनिए, किसी भी बैंकिंग कंपनी में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको दो मेजर साइड मिलेगा. एक मिलेगा रिटेल साइड एंड सेकंड मिलेगा होलसेल साइड. If you get an opportunity to do an industrial training into any of the banking side, I would highly recommend you to do it over a wholesale side instead of a retail side. क्यों? अरे बैठ के रिटेल साइड में थोड़ी कार लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन थोड़ी बेचोगे. You were going to the wholesale side. You try to go into some bigger companies where companies like our, right, Reliance, Jio, Adani, Ambani's, all these bigger people will come and ask 200 करोड़ का लोन दो, 500 करोड़ का लोन दो, 50 करोड़ का लोन दो. इसमें भी again you need to see into the portfolio size where you're getting into. तो try to get into the wholesale side. Retail side में जाओगे तो बैठ के सिर्फ ट्रैक्टर लोन देते रहोगे. बेटा ये सब नहीं करना है, अपने को जाना है होलसेल साइड में जहाँ पैसा भी है, लर्निंग भी है. तो कोशिश करें होलसेल साइड में मूव करें when you're going into the banking sector. Now advantage of getting into credit manager is
प्योर एडवांटेज ऑफ गेटिंग इट, यू अंडरस्टैंड द मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल। आप मेरा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगोगे, आप मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस समझोगे, एंड देन यू विल अप्रूव द लोन। ऐसे लोन थोड़ी दोगे, 100 करोड़ का लोन ऐसे दे देंगे, इल्ले, यू विल सी, यू विल चेक द कोलेटरल। रिलेशनशिप मैनेजर में सर हम सीएस का क्यों काम है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, यू गाइस अंडरस्टैंड द नंबर, बीकॉम वाले को नहीं समझेगा, आपको समझेगा, आप स्मार्ट बच्चे हो। You guys can easily understand the banking products which are there, so that is really important. अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में they'll ask you what is repo rate, what is reverse repo rate, what is SLR, what is CLR। इसके साथ साथ they will ask you कि what is the process of giving a loan, what all documents you will check when you're giving a loan to someone, right? तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखो चालू करेंगे। रेशियोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट, दैट इज समथिंग विच दे विल चेक इट आउट, फाइनेंशियल एक्यूमेन दे विल चेक इट आउट, है ना। और जनरल नॉलेज ऑफ अ बैंकिंग की कॉन्सेप्ट्स कुछ देखेंगे, जैसे एसएलआर मैंने बताया, सीआरआर बताया, राइट, रेपो रेट क्या है, लोन प्रोसेसिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बहुत देख लेना, वो चीज़ रहेगा, राइट। इसमें आपको एक क्रेडिट रिस्क करके एक चैप्टर है, राइट, आपके रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप वो मॉड्यूल के लिए ऑप्ट करते हो तो आपके एसपीओ में, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो, क्रेडिट रिस्क। चलो अब बात करते हैं ट्रेजरी। देखो यार, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, बैंक के पास ही है, राइट, एंड दे नीड टू मैनेज अ फंड, ऑफ कोर्स देयर वर्किंग कैपिटल नीड टू बी मैनेज, देयर फंड नीड टू बी मैनेज, राइट। इसके साथ साथ लॉट ऑफ क्लाइंट्स विल बी डूइंग फॉरवर्ड, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ये ट्रेजरी इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रोल थ्रू विच बैंक इज अर्निंग अ ह्यूज मनी, बहुत पैसा कमाता है। अब देखो यार, बैंकिंग इंडस्ट्री इज हाईली गवर्नड इंडस्ट्री, कौन कवर करता है बेटा, आरबीआई। आरबीआई बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस रिपोर्ट्स, यू नीड टू मेंटेन सम ऑफ द नंबर्स एंड ऑल दिस स्टफ, तो कंप्लायंस में भी बहुत ज्यादा डिमांड, एंड डेफिनेटली यू माइट बी आल्सो इनटू दिस एज वेल। नाउ से फॉर एग्जांपल सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंकिंग कंपनी इंटरव्यू, ठीक है सर, मैं बैंकिंग कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ बैंकिंग कंपनी इंटरव्यू। तो लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। से फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन आईसीआईसीआई बैंक, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक में जाना है। नाउ गाइस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू पे जाओगे, सबसे पहले जाने का, स्क्रॉल डाउन करने का, सर्च करने का, इन्वेस्टर, देखा आपको इन्वेस्टर रिलेशन हर एक कंपनी के वेबसाइट पे रहता है, इन्वेस्टर रिलेशन। अयो क्या हो गया, रिलोड मारे इसे। इन्वेस्टर रिलेशन में जाएंगे हम लोग, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, ऐसे गंदे तरीके से क्यों आ रहा है भाई, नाराज हो गया। कोई कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर आपका बैंक अकाउंट खोल के दिखाइए, नालायक, नहीं दिखाएंगे बेटा, है ना। चलो यहाँ से चलते हैं, इन्वेस्टर रिलेशन ओवरव्यू, ऐसा क्यों आ रहा है ना। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग। आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट हैक हो गई क्या, नहीं बेटा ऐसे तो हो नहीं सकती, अपडेट पे होगी या मेंटेनेंस पे होगी। नए टैब पे खोल कर देखता हूँ इसको, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अभी तो ये ओपन नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू गाइस, बाद में आप ओपन देख लेना, आई विल शो यू इन द अपकमिंग सेशन। यहाँ पे आपको जब भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखेगा ना, तो यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट वेरी केयरफुली बिफोर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। ये इज्जत से पढ़ के जाना, इससे इसको पढ़ने से आपको काफी ज्यादा एज मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। बैंकिंग का एक मेरा मटेरियल बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया से देख लीजिएगा, स्कैन करिए इसको, फटाफट स्कैन करिए और उसे डाउनलोड कर ले और पढ़ लीजिए, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव गॉन थ्रू द लिस्ट, और मैंने एक बहुत ही शानदार काम किया बेटा। आप जैसे ही आप डे 1 सेक्शन पे जाओगे, डे 1 सेक्शन के जो मास्टर क्लास है वहां पे मैंने ना एक एक्सेल फाइल ही डाल दी है, आपको सर्च करिए, सेक्टर सर्च करिए, और उसके हिसाब से आप डोमेन और इंडस्ट्री सर्च करिए और जाइए फटाफट ढूंढिए अपने लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनीज। बैंकिंग का इंटरव्यू टफनेस विल बी समवेयर अराउंड, आई वुड मार्क इट आउट एज 6.5 राइट आउट ऑफ 10, थोड़ा सा इजी रहेगा, राइट, विच इज देयर। बैंकिंग से इफ यू आर टारगेटिंग टू स्विच, सर बैंकिंग से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो बैंकिंग में से फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इनटू एन इंटरनल ऑडिट, तो यू कैन इजीली मूव टू एन इंटरनल ऑडिट प्रोवाइडेड यू हैव वर्कड इनटू एन इंटरनल ऑडिट ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर, राइट, दैट इज देयर। Few people can also move to investment banking, which is, but it is mostly gonna be a back office or mid office. क्या होता है back office, mid office? अरे सीखेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो मूव टू द फाइनेंस फंक्शंस ऑफ द कंपनीज, जैसे ट्रेजरी में क्या, इजीली यू कैन मूव टू ट्रेजरी फंक्शन। फॉर एग्जांपल आई वर्क विद आईसीआईसीआई बैंक ट्रेजरी डोमेन, यू कैन मूव टू बैंक ऑफ अमेरिका ट्रेजरी फंक्शन, तो दैट इज दैट। तो अभी के लिए इसका मास्टर क्लास कमिंग सून है, राइट, कमिंग सून, जल्दी आ जाएगा, बट यू कैन यूज द रीडिंग मटेरियल विच इज देयर।
ओके, नाउ लाइफ में बड़ा सिंपल है यार, देखो एलिमिनेशन ऑप्शन सोचो कि यार क्या नहीं करना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, है ना। ऑफ कोर्स वी विल लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट यस यार डीटीवीटी नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, डायरेक्ट टैक्स या टैक्स में मजा नहीं आ रहा, राइट। कंसल्टिंग मुझे सही लग रहा है, तो कंसल्टिंग आप सोच सकते हो, राइट। IB भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। दिस इस तरीके से यू नीड टू डिसाइड इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई विल टेल यू सम स्टोरी व्हिच विल हेल्प यू आउट टू डिसाइड अ डोमेन इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट अ बैंकिंग डोमेन, DT, IDT domain and consulting domain, right? In the separate section, of course, we'll be covering out about one of the very interesting domain, and that is investment banking, right? So that's it for today's session, and definitely I'm assuming that you guys are enjoying the session out. Definitely do let me know the feedback, right? And we'll be really happy to connect with you and meet you someday, right? Whenever जब भी हमारा कोई मीटअप होगा या कुछ भी होगा, definitely आपसे जरूर मिलेंगे। Till then, bye bye, take care and stay safe। और हाँ, अरे पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे तब मजा आएगा, राइट। आगे के सेशन में मिलते हैं, और होमवर्क करते रहिएगा। So GIR was, beyond the expectations. We met so many people, we met so many mentors. CA बनने के बाद सर का सेशन ज्वाइन करने के बाद आधी टेंशन तो खत्म हो गई कि हाँ GIR वाला CA मोंग ज्वाइन करने के। I have attended sir's GIR batch number 59 and it was a great session honestly. Honestly, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा मैं पहले का GIR के बाद था, I rate 515 because communication skills plus interaction skills plus resume and personality development almost सब कुछ ही हर एरिया में कवर किया GIR, so yes 515. Quality of content that we get to know, all the things were very good. Physical campus कैसे होगा उसका एक थोड़ा सा टेस्ट मिला था। ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो पहले नहीं पता था, कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, ऑफ कैंपस रिलेटेड, जैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो ओवरऑल वर्थ इट रहा।